guys, this is Karan, your friend on Road to Success, and we'll be learning math, science, and many other subjects together. So let's start with our very first lecture on class 9th biology, chapter fundamental unit of life. Our first topic would be dates and discoveries. तो पहली डिस्कवरी कब हुई थी 1665 में और रॉबर्ट हुक ने की थी। क्या हुआ था, अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उन्होंने कॉक की स्लाइस को लिया और उसको देखा। कॉक क्या है? कॉक कॉक is a substance which comes from the bark of a tree. So what did he see? He saw that cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. इन्हीं little compartments को उन्होंने सेल का नाम दिया। 1674 में ल्यूविन हाइट ने अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से एक फ्री लिविंग सेल देखा था पॉन्ड वाटर में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। 1839 में पर्किंस ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया था। Now what is protoplasm? It is the fluid substance of the cell. Next we'll talk about cell theory given by Schleiden, Schwann and Virchow. Cell theory was first given by Schleiden and Schwann and this was further expanded by Virchow. First statement जो है वो Schleiden and Schwann ने combine करके दी थी and second जो है वो Virchow ने दी थी। First statement क्या है? All the plants and animals जो है वो cell से composed होते हैं and cell is the basic unit of life. And second क्या है? सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। और क्या स्टेटमेंट दी थी? Omnis cellulae est cellulae. This was the statement given by Virchow. So these are the three scientists, Schleiden, Schwann and Virchow. सेल बहुत कर लिया, अब सेल देख भी लेते हैं, है ना। तो टेम्परेरी माउंटिंग ऑफ अनियन पील करेंगे हम। तो एक अनियन लेना है, उसका आउटरमोस्ट पील निकालें एंड कट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। देन कॉन्वेक्स सरफेस से उसका थिन ट्रांसपेरेंट पील फोर्सेप्स की हेल्प से निकालें। उसको पील को हम वॉच ग्लास में डालेंगे जिसमें पानी है। देन वील ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रोनिन। व्हाट इज सैफ्रोनिन? इट्स अ स्टेन। अब पील के केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंटली कलर करेगी। सम रीजन्स विल अपीयर डार्कर व्हाइल अदर्स विल बी लाइटर। अपार्ट फ्रॉम सैफ्रोनिन हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन या फिर मिथिलिन ब्लू भी यूज कर सकते हैं। नाउ टेक अ क्लीन स्लाइड एंड उसमें ग्लिसरीन डालेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लिसरीन? ग्लिसरीन विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम ड्राइंग अप। ब्रश और नीडल की हेल्प से हम पील स्लाइड में डालेंगे। देन वी विल कवर इट विद कवर स्लिप अवॉइडिंग एनी एयर बबल। एक्सेसिव ग्लिसरीन निकालेंगे एंड देन वी ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दीज आर द स्टेप्स: कटिंग द अनियन, peeling out the peel, putting on the slide, है ना, cover slip put करना, then we'll watch it on microscope and we'll see these onion peels as like this. So cells कैसे हैं? Prick layered है, darker region nucleus का है and ये cytoplasm है ना. So these are the onion peels. सेल्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर लेते हैं। दो हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। A single cell में constitute a whole organism। एक सेल ही सारे ऑर्गेनिज्म का काम कर रहा है, जैसे कि अमीबा, क्लमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अमीबा में क्या है? यही सेल रेस्पायर कर रहा है, यही सेल फूड इंजेस्ट कर रहा है, यही सेल डाइजेस्ट करेगा और यही एक्सक्रीट करेगा, यही रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो एक ही सेल सारा ऑर्गेनिज्म का काम कर रहा है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मेनी, तो एक सिंगल बॉडी में बहुत सारे सेल ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं और ये ग्रुप्ड सेल्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, जैसे कि फंगाई, प्लांट, एनिमल्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। सेल का शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं। शेप एंड साइज सेल के फंक्शन से स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि अमीबा में स्यूडोपोडिया को इलोंगेट करना है तो उसके लिए चेंजिंग शेप्स होंगी। कुछ सेल्स में क्या होता है, कुछ सेल्स में उसकी जो शेप है वो मोर और लेस फिक्स्ड हो जाती है फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन दे परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। दिस इज अ नर्व सेल, न्यूरॉन है, इट्स अ मीटर लॉन्ग होती है ये, सी। एंड दिस इज रेड ब्लड सेल्स जो राउंड एंड बाइकॉन्केव होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो, ट्रकीड एंड मेसोफिल सेल्स, दीज आर प्लांट सेल्स, है ना। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दैट सेल शोज डिविजन ऑफ लेबर। नाउ हमारी मल्टीसेल्युलर बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट काम करते हैं, उन्होंने अपना अपना काम बांटा हुआ है। दैट इज व्हाट वी नो कॉल इट एज डिविजन ऑफ लेबर।
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाती है। वैसे ही सेल में डिविजन ऑफ लेबर होता है। इनमें स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे कि नया मटेरियल बनाना सेल के लिए, सेल का वेस्ट मटेरियल खत्म क्लियर अप करना। तो इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. Next we'll talk about the structural organization of a cell. एक सिंपल सेल है, उसमें क्या होगा? एक सेल मेम्ब्रेन होगी, उसका न्यूक्लियस होगा और दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म होगा. So cell has special components which are almost present in every cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these components. We'll talk about our very first component, plasma membrane or the cell membrane. अब ये क्या है? दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग एंड ये क्या करता है? सेल के इनर कंपोनेंट को एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है. Plasma membrane allows or permits entry and exit of some materials while prevent the entry of other materials. So cell membrane is called as selectively permeable membrane. ठीक है? Now plasma membrane is flexible because it is made of lipids and protein. इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमें एंडोसाइटोसिस के बारे में पता चलता है. वो क्या प्रोसेस है? इट्स द flexibility of the cell which enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Amoeba acquires its food through such processes. ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है. स्यूडोपोडिया ग्रो किया क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी, उसको फूड को engulf कर लिया है, and this is what is known as endocytosis. Next property of plasma membrane is diffusion. Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. Okay? तो क्या हो रहा है? सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और एनवायरनमेंट में कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेगी. सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से सेल के अंदर को मूव करेगी. So basically diffusion happens from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Next we'll talk about osmosis. So what is osmosis? Movement of water molecules through a selectively permeable membrane is called osmosis, and osmosis also obeys laws of diffusion. ठीक है? Osmosis में क्या हो रहा है? It is a net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a higher solute concentration. Now we'll talk about three types of solutions: hypotonic solution, isotonic solution and hypotonic solution, and what will happen to the cell if they are put in such solutions. ठीक है? Now what is a hypotonic solution? अगर जो मीडियम है जिसमें सेल सराउंडेड है वो उसमें हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, सेल से ज्यादा है, तो क्या होगा? अब मीडियम में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो ऑफ कोर्स water will move from the environment to the cell. Cell will gain water by osmosis. So क्या होगा? Cell is likely to swell. Isotonic solution में क्या है? Medium has exactly the same water concentration. Same water concentration है, जितनी सेल में है उतनी मीडियम में. तो equal amount of water जो है वो सेल के अंदर जाएगा, सेल के बाहर जाएगा. So there is no overall movement of water. So cell will stay at the same size. Next we will talk about hypertonic solution. Now what is a hypertonic solution? उसमें क्या है? मीडियम का जो है कॉन्सेंट्रेशन लोअर है वो सेल से, एंड तो क्या होगा? जब मीडियम का वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल में ज्यादा है, तो सेल से एनवायरनमेंट की तरफ पानी जाएगा, तो क्या होगा सेल को? सेल विल श्रिंक. Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. This is osmosis in a plant cell. Isotonic में ये normal cell रहेगा, same shape में रहेगा. हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है? सेल विल लाइकली स्वेल अप, एंड हाइपोटोनिक में श्रिंक हो गया है, सेल वॉल वैसे ही इंटैक्ट है. नाउ यूनिसेल्युलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मोस्ट प्लांट सेल, दे गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लाइफ ऑफ सेल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर. Cell also obtain nutrition, and different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. So use of energy कब होता है? जब ये ट्रांसपोर्ट
वर्क करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है? सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, इट्स नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल। ओके, सो cell wall is an addition to the plasma membrane which gives rigidity to the plant cell. Okay, it lies outside the plasma membrane and it's composed of cellulose. Now, cellulose is a complex substance जो structural strength देगा plant को. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage of contraction of contents. ठीक है? We'll talk about plasmolysis. This is what is plasmolysis. जब सेल में से पानी बाहर जाता है तो सेल श्रिंक हो जाता है. So this phenomenon is known as plasmolysis, and the cell is known as plasmolysed cell. It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. Okay, the living cells ही water absorb करते हैं, dead cell नहीं करेंगे. And जब hypotonic solution में cell swell up करता है तो they build up a pressure against the cell wall. तो इससे क्या है, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट नहीं करती है, बिकॉज द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल, therefore there is no damage to the cell. We'll talk about our very important next component, that is the nucleus. Now nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर्स हैं जो ट्रांसफर करवाता है मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर से बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ. ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होती हैं जो विजिबल होती हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है. ना क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए एंड क्रोमोसोम इज यूजुअली मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए में क्या होता है? They contain the information necessary for constructing and organizing cell. And what are genes? Genes are the functional segment of DNA. One marker question again. It's a functional segment DNA. Now, next we'll talk about chromatin material. जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो डीएनए is present as chromatin material. Okay, so chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure, and whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. Now we'll talk about next role. Nucleus plays a central role in cellular reproduction. ठीक है, जब सेल एक सेल जो है वो डिवाइड होता है दो न्यू सेल्स में, दैट इज नोन एज सेल्युलर रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो it also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop. किस तरीके से सेल डेवलप करेगा and what form it will exhibit, differentiation कैसे होगी उसकी, है ना. Next we'll talk about classification of organism on the basis of nature of nucleus. न्यूक्लियस के नेचर के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. Such prokaryotic organisms are known as prokaryotes and eukaryotic organisms are known as eukaryotes. Prokaryotic organism मतलब pro मतलब primitive और primary and karyote मतलब nucleus. तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है एंड न्यूक्लियर रीजन इज अनडिफाइंड. सो सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जहां पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है उनको हम न्यूक्लियोइड कहेंगे. एंड सच ऑर्गेनिज्म आल्सो लैक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. इनका जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, those are present in membranous vesicles and not in plastids as in eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है and they have chlorophyll containing specialized organelles called plastids. All the organelles are present in eukaryotic organisms. So this is our basic prokaryotic cell. This is a nucleoid, no such an undefined nuclear region. There is no nuclear membrane, है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, lack of cell organelles है. यहाँ पर देखिए these are our eukaryotic cell. यहाँ पर सारे ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, which we'll study about. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. So this is our eukaryotic organism. So that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. And if you have any queries, do comment down below. Thank you. Bye bye.